Good morning, student. Today's topic is physical properties of metal and non-metal. Firstly, we discuss the physical state. Most of the metals are solid at the room temperature. Mercury is only metal known to occur in liquid state in nature. No metal exists in gaseous state, but non-metal are generally solid and gaseous. Non-metal like sulfur, phosphorus and carbon are solid. Non-metal like hydrogen, oxygen and nitrogen are gaseous. Bromine is only the non-metal which exists as liquid at the room temperature. Second, malleability. The property which allow the metals to be hammered into thin set or foiled, it's called malleability. Most of the metals are malleable. Gold, silver, aluminum and copper and highly malleable metals. Because of this property of metals, they are very useful to us. For example, aluminum foil are widely used for safe packing of foodstuff, medicine, chocolates, etc. How zinc metals breaks into pieces on hammering. So zinc is brittle in nature. Only zinc non-metal में non-metal are non-malleable and they cannot be beaten into the thin set on hammering rather they break into small pieces. ये टूट जाते हैं छोटे छोटे टुकड़े में. अगर इसको hammering करेंगे तो non-metal क्या टूट जाएंगे. The property due to the which non-metal if in a solid state break up into pieces of hammering is called brittleness. Again I repeat you, the property due to the which non-metal if in a solid state में है तो ये क्या करें break up into pieces of on hammering is called brittleness. जब उसको हम मारेंगे, हम हथौड़े से मारेंगे तो क्या हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएंगे. लेकिन किस में होता है ये नॉन मेटल. फॉर एग्जांपल सल्फर एंड coal break up into small pieces of hammering, but some non-metals such as hydrogen, oxygen in gaseous state and bromine in liquid state do not show the property of brittleness. Ductility. क्या है ductility? Most of the metal can be drawn into thin wire. आपने वायर देखा होगा, तार जो होते हैं वायर, वो डक्टिलिटी के कारण ही बनते हैं. द property which allow the metal to be drawn into thin wire, it is called ductility. Gold and silver and aluminum is the best ductile metals. Copper and aluminum, iron and magnesium metals can easily be drawn into thin wire, so they are very ductile. The wire inside the electric cables are mostly made of a copper metal. आपने देखा होगा copper metal का बना होता है. टंगस्टन कहाँ होता है? टंगस्टन यूज फॉर मेकिंग द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब. जो बल्ब का फिलामेंट जलता है वो क्या होता है? टंगस्टन का होता है. और ये मेटल होता है. नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल. When stretch non-metal like sulfur and phosphorus break into pieces and do not form a wire. इसको वायर के रूप में नहीं बनाया जा सकता. Luster means चमक. Most of the metals are luster. They have a shine surface. This property क्या होती है? Most of the metal are luster. They have a shiny surface. This property is called metallic luster. The shiny surface of metal make them good reflector of light because of their metallic luster. Gold, silver and platinum metals are used for making jewelry and decorative articles. The glass mirror have thin coating of a metal like silver, aluminum at their
bag which act as a filter of reflector of light. Non-metal do not have a shiny appearance like metals. They have dull appearance. However, iodine and graphite show some luster. Okay, फिर क्या है? Conductivity of heat. Conductivity heat पे आप देखिए metal are good conductor of heat, whereas non-metal are poor conductor of heat. For example, silver is a best conductor of heat, followed by copper. Aluminium and iron are also good conductor of a heat. For this reason, metal like aluminium, iron, and copper are used for making utensil and water boilers. However, bismuth is a poor conductor of a heat. Non-metal are poor conductor of a heat. Diamond is the only non-metal which are good conductor of heat. हार्डनेस की बात करेंगे, मेटल आर जनरली हार्ड होते हैं. फॉर एग्जांपल आयरन आपने देखा होगा, मेटल्स आर वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. सो आयरन मेटल्स इन द form of a steel it used to the construction of a bridge, railway lines, machine etc. however सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट मेटल होते हैं. आयरन कैसा होता है? हार्ड होता है. बट सोडियम पोटेशियम कहते हैं सॉफ्ट होते हैं एंड कैन इजीली बी कट बाई नाइफ. चाकू से भी काटा जा सकता है, ऐसे मेटल्स होते हैं. नॉन मेटल आर नॉट हार्ड या स्ट्रॉन्ग, दे इज इजली क्या होते हैं? ब्रोकन, टूट जाते, ब्रेक हो जाते हैं. व्हेन ए लार्ज वेट इज पुट ऑन देम, जो कोई लार्ज वेट पे रखा जाता है तो टूट जाते हैं. ओनली डायमंड एक ऐसा है द हार्डेस्ट नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस. सिर्फ एक डायमंड को छोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? कैसे हैं आपके? टूट जाते हैं जल्दी. दे इजिली ब्रेक डाउन व्हेन ए लार्ज वेट पुट इन देम, ओनली डायमंड को छोड़ के.